Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet T, so we shall be continuing with it. For today, the first idiom is to throw a gauntlet. Throwing a gauntlet होता क्या है, जो ग्लव होता है बहुत ही ज़्यादा स्टील का बना हुआ या फिर मोस्ट प्रोटेक्टिव ग्लव जिसको बोलते हैं, तो उसी को गॉन्टलेट बोलते हैं। और इस ग्लव को रिलेट करने के लिए अगर आपने मार्वल्स देखी है तो उसके अंदर जो थॉर्नस यूज करता है द ग्लव, तो उससे भी यू कैन रिलेट, वो एक गॉन्टलेट ही है। ठीक है, इन्फेनाइट आई गेस उसका नाम भी है कुछ, इन्फेनाइट गॉन्टलेट है ना, समवट लाइक दैट, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। ओके, टू थ्रो अ गॉन्टलेट का मतलब है गिव अ चैलेंज। ठीक है, आपके सामने किसी ने हथियार जो है वो नहीं, हथियार तो नहीं, आपके सामने किसी ने बहुत ज़्यादा स्टील के आड़े अड़ा दिए, तो मतलब आपको चैलेंज कर दिया कि आओ हिम्मत है तो ये तोड़ कर दिखाओ। ठीक है, तो आपको गॉन्टलेट से याद रखना है मार्बल्स, और मार्बल्स के अंदर इट्स ऑल द गेम ऑफ चैलेंजिंग। ठीक है, तो बस उसी से याद रखना है क्या, गेव अ चैलेंज। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं कैसे, by saying that our team couldn't do it. He threw a gauntlet and we accepted the challenge. Most of the times challenge turns out to be very fruitful, क्योंकि इनसे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आई रिपीट, नॉट एवरी टाइम. Okay, so this was the first idiom. Moving on to the second, we have the second one. Through caution to win. थ्रोइंग कॉशन टू विन का मतलब आप हवा से ही टकरा रहे हो, हवा से टकरा रहे हो मतलब क्या, यू आर टेकिंग रिस्क। ठीक है, तो आप क्या कहना, टेकिंग रिस्क। लाइक ही इन्वेस्टेड he threw a caution to win by investing all his savings in his new project. ठीक है, नए प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप सारी सेविंग्स एक साथ करके डाल रहे हो तो दैट इज नथिंग बट थ्रोइंग अ कॉशन। तो ऐसे आप ले सकते हो क्या, ऐसे आप ले सकते हो क्या, ग्रेट रिस्क। अब इसको याद रखने के लिए आपने देखा होगा भाई, खतरों के खिलाड़ी एक शो आता है जिसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं अकॉर्डिंग टू अस, क्योंकि वी आर द ऑडियंस ना, तो हमें बैक स्क्रीन तो बैक स्टेजेस चीजें तो नहीं दिखाई जाती, तो अकॉर्डिंग टू अस लोग क्या करते हैं, खतरा लेते हैं, तो दैट इज व्हाट थ्रोइंग कॉशन टू विंड। ठीक है, अब ये विंड का और इससे लेना देना कैसे है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो हवा में कराए जाते हैं, एंड इन दैट यू जस्ट नीड टू गेट दिस फ्लैग सॉर्ट ऑफ। ठीक है, और ये फ्लैग कहाँ ले रहता है, हवा के अंदर, और ये फ्लैग किससे रिलेटेड है, खतरों के खिलाड़ी से। खतरों के खिलाड़ी इज द मीनिंग, एंड विंड से रिलेटेड ये फ्लैग हो गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम which says the third idiom, to throw in tal. थ्रो इन टाल का मतलब क्या है, एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट। आपने अगर अपनी हार स्वीकार कर ली है तो इट मीन्स दैट यू हैव थ्रोन इन टाल। सो in order to frame its sentence we can say that the team was so far behind
that they threw in tal and focused on their next game. अब गेम चल रहा है, स्कोर कितना है 0-10, टाइम कितना बचा है, टाइम इज से 1 मिनट, ठीक है, जिसमें से 25 सेकेंड्स आर टू बी यूटिलाइज इन ब्रेक एंड ऑल, ठीक है। तो इतने टाइम में स्कोरिंग 10 विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, तो इसलिए टीम ने क्या सोचा, लेट्स थ्रो इन अ टाल और अगले गेम पर फोकस करेंगे। अब तो जो हो गया सो हो गया। अगर आपके पास लिखा आ जाए टू थ्रो इन टाल या फिर आपके पास लिखा आ जाए थ्रो अप स्पॉन्ज, दोनों का मतलब सेम ही है, क्या, टू एडमिट डिफीट। Moving on to the fourth idiom, we have it says throw over. थ्रो ओवर का मतलब होता है रिजेक्शन, किसी चीज को रिजेक्ट करना, ठीक है, या फिर थ्रो अप कार्ड्स, इसका भी मतलब क्या ही हुआ, रिजेक्शन हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, शी थ्रू हिम ओवर हर न्यू बॉयफ्रेंड। कुछ लोग होते हैं जिनको आए दिन नए लोग पसंद आते रहते हैं, तो दैट सेंटेंस इज फॉर हर, रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, आई डोंट वांट यू, मुझे तो वो चाहिए। आप ये सेंटेंस फ्रेम करोगे आईएसएस से रिलेटेड कि किसी और कैंडिडेट को दे थ्रू ओवर सो दैट दे कैन सेलेक्ट यू, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आप सेंटेंस फ्रेम करोगे। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, वी हैव थ्रो बेबी, ये थोड़ा फनी सा है, थ्रो बेबी आउट विद बाथ वाटर। थ्रोइंग बेबी आउट विद बाथ वाटर का मतलब है आपने पानी के साथ साथ बेबी को भी बाहर फेंक दिया। आजकल तो बहुत सारी ऐसी रील्स बन रही है, लाइक यू आर क्लीनिंग योर व्हाट डू वी कॉल बेड and in place of that cleaning you are just throwing the babies down, that is the funny reel, ठीक है। so that means to throw away valuable things along with non-desired ones, non-desired या फिर undesired ones, कोई भी आप लिख सकते हो, along with undesired ones. So in order to frame its sentence, we can say that let's revise policy addressing the issues without throwing baby out with bath water. Some aspects of it are still important. Throwing baby, ठीक है। तो ये कह रहे हैं क्या कि एक पॉलिसी है जिसको दोबारा से रिवाइज करना है, इट इज नॉट दैट द पॉलिसी कंप्लीट एज अ होल इज अ वेस्ट, बट इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स हैं जिनको हम दोबारा से वी कैन से रिवाइज करा सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव
The sixth one, tide over, to overcome, which says I have enough savings to tide over until I find a new job. टाइड ओवर का मतलब है कि जब तक मैं नई जॉब नहीं निकाल लेती तब तक आई कैन ओवरकम माई वी कैन सेव द एक्सपेंडिचर विद माई ओन सेविंग्स. ठीक है, तो ये इडियम उसी को मीन आउट कर रहा है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव द सेवेंथ वन which says tighten one's belt. अगर आप हाथ टाइट कर रहे हो, पॉकेट टाइट कर रहे हो, अपनी बेल्ट टाइट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम पेइंग, और आप कॉस्ट कट आउट कर रहे हो, एक्सपेंडिचर थोड़ा कम कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं क्या, टाइटन वंस बेल्ट. दैट इज टू कट डाउन ऑन वंस एक्सपेंडिचर. अब जो चीजें जरूरत की है सिर्फ वही लोगे, फालतू में नहीं पढ़ना. ठीक है, सो in order to frame its sentence we can say that if we want to save for a house, we'll have to tighten our belts for next few years. ठीक है, तो दिस रेफर्स टू टाइटनिंग द बेल्ट्स, कि अगर आपको वाकई में अपना घर खरीदना है तो क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू सेव मनी फॉर द फॉर सम टाइम. और अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग क्या करते हो कि अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचा करके यू बाय दोज थिंग दैट योर पेरेंट्स आर नॉट लेटिंग यू बाय. ठीक है, तो वो भी यहाँ पर काउंट किया जा सकता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, वी हैव till cow comes home. टिल काउ कम्स होम का मतलब होता है क्या, कि आपने गाय को चराने के लिए लेके गए और ले जा करके छोड़ दिया. अब बोल रहे हो कि अब से वो खुद आ जाएंगी अपने घर. अब उनको तो मजा आता है रोमिंग इन द फील्ड्स, फ्री एयर एंड एवरीथिंग फ्री, तो दे विल बी टेकिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू स्पेंड देयर लाइव्स इन दैट फील्ड. ठीक है, तो वो वहाँ पे किसी से मिल भी सकती हैं, नेचर से मिल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो उसी को बोल रहे हैं क्या, till cow comes home, that means very long period. ठीक है, now in order to frame its sentence we can say that you can wait him to finish talking until it's not happening soon. मतलब someone is talking to another person on phone call and the other body, two bodies are waiting. So one body says to another body, the one who are waiting, if you want to wait for this guy to finish talking, you can wait, but it is not happening soon. He will be taking a very long period of time in order to finish his call. तो उसी को बोल रहा है ये. तो
until cow comes home. Moving on to the next idiom for today, we have the ninth idiom, which says time and again, means very often. जो चीज बार 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 कर रहे हो तो उसको बोलेंगे टाइम एंड अगेन. जैसे कि द टीम हैज ट्राइड टू फाइंड a solution to this problem time and again, yet no, not yet, time and again, and they haven't found it yet. So here we have time and again. मतलब कोई प्रॉब्लम है, सोल्यूशन निकालने की बार बार लगातार कोशिशें जारी हैं, स्टिल वी आर नॉट फाइंडिंग. तो जब लिखा आता है लगातार कोशिश जारी है. अगर आपने हिंदी न्यूज़ चैनल्स कभी देखे हो बचपन में तो आपने सुना होगा ये कैसे लगातार कोशिशें जारी हैं. मतलब किसी को ढूंढने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए, अगर कोई किडनैपर भाग गया है, कोई टेररिस्ट हाथ नहीं आया है, या फिर कोई हमला होने वाला है, रिगार्डिंग दैट उसके पीछे एक नोटिस आया है, तो उसके पीछे भेजने वाले को ढूंढने के लिए तो बोलते हैं वो लोग लगातार कोशिशें जारी है. तो ये टाइम आप इससे रिलेट कर सकते हो, जिससे टाइम एंड अगेन से, जो कहता है वेरी ऑफन. ठीक है, तो सिर्फ याद करने का तरीका है. Now we are moving on to the next idiom. That is the 10th one, which says it is 10th. To air dirty linen in public. टू एड डर्टी लिनन इन पब्लिक का मतलब है, आपको पता है लिनन एक टाइप का क्लॉथ होता है, जैसे कॉटन, वूल, सैटन, ये सब टाइप ऑफ क्लॉथ्स होते हैं. तो लिनन इज ऑल्सो वन ऑफ देम. तो अब आपको क्या करना है, टू एयर डर्टी लिनन इन क्लॉथ का मतलब है टू डिस्कस पर्सनल अफेयर्स इन पब्लिक. ठीक है, अगर आप पर्सनल अफेयर्स को पब्लिक के अंदर डिस्कस कर रहे हो, सो दैट रेफर्स टू व्हाट, टू एयर डर्टी linen in public. And in order to frame its sentence, we can say that the celebrities' decision to air dirty linen. लिनन की जगह अगर आपको लॉन्ड्री देखने के लिए भी मिल जाए तो भी सेम ही मीनिंग है. ठीक है, टू एयर डर्टी लिनन इन पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया shocked their fans. अभी जैसे हाल फिलहाल में स्मृति और पलाश के साथ हुआ है, तो अगर वो लोग डिसाइड करते टू कम ऑन एयर एंड टेल एवरीवन अबाउट देयर पर्सनल थिंग्स, सो दैट वुड हैव फिटेड इन दिस इडियम. ठीक है,
तो वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल अफेयर्स को क्या करते हैं, पब्लिकली अनाउंस कर रहे होते हैं, या फिर कुछ भी होता लाइक दैट। या फिर हार्दिक पांड्या विद हिज वाइफ, प्रीवियस वाइफ, एक्स वाइफ, तो अगर उसके साथ चीज़ें मैटर करते, डिस्कस करनी होती, तो दैट वुड ऑल्सो कम इन एयर। और ऑल्सो अगर कोई फैमिली के अंदर राइवलेंस चल रही है अमंग द मेंबर्स इटसेल्फ, और वो लोग बाहर आकर के दे आर टेलिंग एवरीवन एंड दे आर जस्ट शाउटिंग एंड स्क्रीपिंग एंड मेकिंग अ सीन एंड ड्रामा, सो दैट विल ऑल्सो कम इन टू एयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। ठीक है, तो उन सब से मैटर जो रिलेटेड है वो सब किस में आएंगे, इस ईडियम में आ जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, वी हैव the 11th one, which says to be in a fix। to be in a fix का मतलब होता है puzzled form, puzzled state कह लो, या फिर confusion, ठीक है, या फिर difficult situation। अगर कोई भी पजलिंग सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, नहीं समझ में आ रहा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो, डिलेमा में हो, तो आप क्या यूज करोगे, टू बी इन अ फिक्स। जैसे शी इज इन अ फिक्स बिकॉज शी accidentally sent an email to the wrong person। अगर आप ईमेल गलती से किसी और को भेज देते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हो। और डिफिकल्ट सिचुएशन कैसे क्रिएट हो सकती है कि पजलिंग सिचुएशन कैसे क्रिएट हो सकती है कि वेदर टू डू इट और नॉट। समवन इज आस्किंग यू, यू वांट द जॉब ऑफर राइट नाउ और नॉट, बट यू वांट टू आस्क योर पेरेंट्स कि करना चाहिए कि नहीं, सो दैट विल बी अ पजलिंग सिचुएशन एज वेल। तो आप उससे रिलेटेड यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस। डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे, टुमारो इज योर एग्जाम एंड येट यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग, तो दैट विल बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन अगेन। तब भी you will be in a fix, then also you can use this idiom। then इसी से रिलेटेड दो और idioms हैं जो कहते हैं टू बी इन quandary या फिर टू बी इन horns of dilemma। ठीक है, और दोनों का ही मतलब किससे रिलेटेड है, एक प्रकार की उलझन से। उलझन में हो आप, किसी दलदल में हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्या, टू बी इन अ पजल स्टेट, कंफ्यूजन में, डिफिकल्टी में, उलझन में, तब आप ये ईडियम को यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ईडियम, वी हैव द 11th one, which says to be light years। be light years का मतलब क्या होता है, to be far away from human reach, too far from human reach। लाइट ईयर्स एक एज अ यूनिट की तरह भी यूज होता है इन फिजिकल क्वांटिटीज टू मेजर द टाइम। ठीक है, नाउ in order to frame its sentence we can say that the company's technology is light years ahead of its competitors। ठीक है, तो that refers to what, to be light years। now another idiom for today is to be on pins and needles। अगर आपको पिन और नीडल के ऊपर बिठा दिया जाए तो आप कैसे रहोगे, बहुत ही ज्यादा बेचैन,
ठीक है, तो उसी को बोलते हैं क्या, बेचैन होना। अगर आप बेचैन हो तो इसका मतलब क्या है, यू आर ऑन पिंस एंड नीडल्स। जैसे कि शी वॉज ऑन pins and needles until the test results were announced. On pins and needles, तो someone who is on pins and needles का मतलब क्या है, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन है at that particular point of time. Moving on to the next idiom, we have the 13th one. 11, okay. It is the 12th one, the 13th one, and here it should be the 14th. To beat in retreat. Beat in retreat का मतलब होता है to run away in fear. ठीक है, तो रन अवे इन फियर कब होगा, जब आपके पीछे कोई शेर या फिर कोई भी जंगली जानवर अगर आपके पीछे भाग रहा है, आप सफारी पर निकले हो और सफारी की सवारी करते करते यू हैव टू बीट इन रिट्रीट, क्योंकि आपके पीछे किसी जंगली जानवर ने कह सकते हो पीछे भाग रहा है, तो तब आप ये यूज कर सकते हो टू रन अवे इन फियर. Now, in order to frame its sentence, we can say that the team beat in retreat when they realized that they were lost in woods. So once you are lost, you try to run in fear. तो बस उसी के लिए ये idiom है. Now moving on to the last idiom, which says to beat the clock. Beating the clock का मतलब है to do something very fast within the time limit. To do something within the time limit. So if you are doing something within the time limit, that refers to what? Beat the clock. जैसे कि in order to frame its sentence, we can say that we need to work fast and beat the clock in order to finish this project by Monday. ठीक है, and this refers to beat the clock. Beating the clock मतलब कोई भी काम जो बहुत जल्दी से कर लो आप और तेज तेज स्पीड में कर लो, so as to finish the task within the time limit. यहाँ पे task भी आ सकता है. It can be task. Alright, so this was all for today. We shall continue tomorrow, and thank you for watching my lecture.